दोस्तों, इस वीडियो में इंटरव्यू में पूछे जाने वाले डिफरेंसेस की एक पूरी लिस्ट है। 40 डिफरेंसेस मैंने इस पूरे वीडियो में दिया हुआ है विथ रियल टाइम एग्जाम्पल। सो अगर मोस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डिफरेंसेस सारे के सारे इसमें अवेलेबल हैं। REST API, Representational State Transfer, is a lightweight, flexible, stateless architectural style that uses HTTP methods get, post, put, delete to access and manipulate resources, often exchanging data in JSON or XML. SOAP API, Simple Object Access Protocol, is a protocol that defines strict standards for exchanging structured information using XML, usually over HTTP, with built-in security and error handling. Find the difference between both REST API versus SOAP API with real-time examples. दोस्तों, ये जो डिफरेंसेस हैं इसको आप समझिए, याद करिए, क्योंकि इसी टाइप के डिफरेंसेस आपके हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसमें मैंने पूरा रियल टाइम एग्जांपल भी दिया हुआ है। INumerable, used for in-memory collection like list, array. It loads all data into memory and then works on it, best when data is small. iQueryable, used for remote data source like SQL database. It builds a query and executes on the database side, fetching only required data, best for large data. Find the 10 difference between both INumerable and iQueryable with real-time examples. दोस्तों, ये जो डिफरेंसेस हैं इसको आप समझिए, याद करिए, क्योंकि इसी टाइप के डिफरेंसेस आपके हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसमें मैंने पूरा रियल टाइम एग्जांपल भी दिया हुआ है। Interface. An interface is like a contract. It only tells what a class should do, method signatures, but not how to do it. Abstract class. An abstract class is a base class that can have both incomplete methods, or abstract, and complete methods with code. Find the 10 differences between both interface and abstract class with real-time examples. दोस्तों, आपने जितने भी इंटरव्यू दिए होंगे उसमें से किसी न किसी में इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बीच में डिफरेंस पूछा गया होगा। सो ये आप प्रॉपरली समझिए और याद करिए। इसका रियल टाइम एग्जांपल भी अवेलेबल है। Value type. Stores the actual value directly in memory. Stored in stack. Example, int, float, struct. Reference type. Stores the reference, address of the value, not the actual data. Stored in heap. Example, class, object, string. Find the 10 difference between both value type versus reference type with real-time examples. सो दोस्तों, वैल्यू टाइप जो है वो स्टैक में स्टोर होता है और रेफरेंस टाइप जो है वो हीप में स्टोर होता है। तो ये भी मल्टीपल इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है।
Session, a server-side storage mechanism that stores user information for the duration of a user's visit, or until timeout. Cookie, a client-side storage mechanism that stores small pieces of data in the user's browser. Find the difference between both session versus cookie with real-time examples. दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी डेवलपमेंट करते हैं तो आपको कुकीज़ और सेशन की ज़रूरत पड़ती ही है। कहीं कुकीज़ में आप कोई इन्फॉर्मेशन रखते हैं और सेशन में हम एप्लीकेशन लेवल पे कुछ वैल्यूज़ हैं उसको भी स्टोर करके रखते हैं, तो इसको भी आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करिए। Struct, a value type that holds data directly, mostly used for small, lightweight objects, stored in stack memory. Class, a reference type that stores a reference or address to the object, stored in heap memory, suitable for complex, large objects. Find the 10 difference between both struct versus class with real-time examples. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्ट एंड क्लास। ये भी मल्टीपल इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। Stored procedure, a precompiled collection of SQL statements and optional control of flow logic stored in the database used to perform operations like insert, update, delete, etc. Function, a reusable SQL routine that always returns a single value, scalar, or a table used mainly for computations. Find the difference between both stored procedure versus function with real-time examples. आप एसक्यूएल डेवलपर हों या नॉर्मल फुल स्टैक डेवलपर, ये क्वेश्चन आपसे कंपलसरी हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। आप देख सकते हैं, तो आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करिए, स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। Static members belong to the class itself rather than any object, shared across all objects, accessed using the class name. Instance members belong to a specific object. Each object has its own copy, accessed through the object reference. Find the 10 difference between both static members versus instance members with real-time examples. दोस्तों ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, स्टैटिक मेंबर और इंस्टांस मेंबर, कब हमको स्टैटिक यूज़ करना चाहिए, कब हमको इंस्टांस यूज़ करना चाहिए, ये पूरा उसका एक्सप्लेनेशन है। इसको आप प्रॉपर समझिए, इसका एक रियल टाइम एग्जांपल भी दिया हुआ है। Static class, a class that cannot be instantiated. All members must be static. Used when functionality is common and doesn't need object creation, e.g., math class. Singleton, a design pattern that ensures only one instance of a class exists in the entire application. Object creation is controlled. Find the 10 differences between both static class versus singleton with real-time examples.
आपसे ये ज़रूर पूछा गया होगा कि स्टैटिक क्लास क्या है और सिंगलटन हम कब यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न होता भी है, और सिंगलटन जो है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है। Static constructor is a constructor that initializes static data members of a class. It is called only once, automatically, before any object is created or static members are accessed. Instance constructor is a constructor that initializes instance, non-static members of a class. It is called every time a new object of the class is created. Find the 10 differences between both static constructor versus instance constructor with real-time examples. जब भी आप डेवलपमेंट करते हैं, आप मॉडल और क्लास बनाते ही हैं। सो हर क्लास में कहीं ना कहीं आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर वही दिया गया है कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है और क्या उसके इंफॉर्मेशंस हैं। SQL, or Structured Query Language, databases are relational databases that store data in tables with rows and columns using predefined schemas. NoSQL, or Not Only SQL databases, are non-relational databases that store data in flexible formats like key value, documents, column-based, or graphs. Find the difference between both SQL versus NoSQL with real-time examples. So this is the difference between SQL and NoSQL. Both are different databases. एक हम रिलेशनल डेटाबेस है और एक में हम कुछ भी इंफॉर्मेशन, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, डॉक्यूमेंट, रॉ डेटा भी स्टोर करते हैं। Stack, a linear data structure that follows the LIFO, last in, first out principle. The last element inserted is the first one removed. Example, stack, int, stack equals new stack int. Queue, a linear data structure that follows the FIFO, first in, first out principle. The first element inserted is the first one removed. Example, q int q equals new q int. Find the 10 differences between both stack versus queue with real-time examples. आपने कभी ना कभी लीफो और फीफो यूज़ किया होगा। सो ये वही है, स्टैक और क्यू। कब हमें स्टैक यूज़ करना चाहिए, कब हमें क्यू यूज़ करना चाहिए, यहाँ पर उसका पूरा डिफरेंस दिया हुआ है विथ रियल टाइम एग्जांपल के साथ। Angular, a full-fledged front-end framework developed by Google for building single-page applications, SPAs. React, a JavaScript library developed by Facebook, mainly for building UI components. दोस्तों,
ये दोनों बहुत ही डिमांडिंग है मार्केट में, एंगुलर और रिएक्ट। सो कब हमें एंगुलर पे जाना चाहिए, कब हमें रिएक्ट पे जाना चाहिए, पूरा उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। Sealed class, a class that cannot be inherited, used to restrict inheritance and prevent further extension. Example, sealed class logger, open curly bracket, close curly bracket. Abstract class, a class that cannot be instantiated directly and may contain abstract, unimplemented, and concrete methods. Example, abstract class shape, open curly bracket, public abstract void draw, parenthesis, semicolon, close curly bracket. Find the 10 difference between both sealed class versus abstract class with real-time examples. हियर द डिफरेंस बिटवीन सील्ड क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दोनों के रियल टाइम एग्जांपल भी अवेलेबल है। आप प्रॉपरली रियल टाइम एग्जांपल देखिए और समझिए कि सील्ड क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमें कब हमारे एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहिए। REST, or representational state transfer, is an architectural style that uses predefined endpoints like /users, /products for communication between client and server. GraphQL is a query language for APIs where the client asks exactly for the data it needs in a single request. Find the difference between both REST and GraphQL with real-time examples. सो हमें कब रेस्ट और कब ग्राफ क्यूएल यूज़ करना चाहिए, यहाँ पर दोनों के बीच में कंपैरिजन दिया हुआ है। मल्टीपल पॉइंट के ऊपर कंपैरिजन है, आप इसको समझिए और अंडरस्टैंड करिए। REST API, Representational State Transfer, is a lightweight, flexible, stateless architectural style that uses HTTP methods get, post, put, delete to access and manipulate resources, often exchanging data in JSON or XML. SOAP API, Simple Object Access Protocol, is a protocol that defines strict standards for exchanging structured information using XML, usually over HTTP, with built-in security and error handling. Find the difference between both REST API versus SOAP API with real-time examples. हियर द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एपीआई एंड सोप एपीआई, कब हमें को रेस्ट एपीआई यूज़ करना चाहिए, कब हमें सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल सोप एपीआई को यूज़ करना चाहिए। Dispose is a method defined in the iDisposable interface. It is called explicitly by the programmer to release unmanaged resources like files or database connections. Finalize is a method defined in the System.Object class. It is called by the garbage collector automatically before reclaiming memory. Find the 10 difference between dispose versus finalize with real-time examples. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द डेवलपमेंट एवरी इंटरव्यू, कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो कब वो डिस्पोज होता है, क्या और फाइनली का यूज़ क्या है।
Post is an HTTP method used to create a new resource on the server. Each request can result in a new resource being created. Put is an HTTP method used to update an existing resource or create if it doesn't exist, but it is idempotent. Repeated calls give the same result. Find the difference between both post versus put with real-time examples. जब भी आप कोई भी वेब एपीआई बनाते हैं तो उसमें पुट और पोस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपको डिफाइन करना पड़ता है कि कौन सी एपीआई पुट के लिए यूज़ होगी, कौन सी एपीआई पोस्ट के लिए यूज़ होगी। दोनों के बीच में यहाँ पे डिफरेंसेस दिया हुआ है। Process. An independent program in execution with its own memory space and resources. Thread. A lightweight unit of execution inside a process that shares the process's memory and resources. Find the difference between both process versus thread with real-time examples. दोस्तों, ये जो डिफरेंसेस हैं इसको आप समझिए, याद करिए, क्योंकि इसी टाइप के डिफरेंसेस आपके हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसमें मैंने पूरा रियल टाइम एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। Primary key, a column or set of columns that uniquely identifies each record in a table. A table can have only one primary key. Unique key, a constraint that ensures all values in a column or combination of columns are unique, but it allows one null, depending on DBMS. Find the difference between both primary key versus unique key with real-time examples. MVC, Model View Controller, is a design pattern that separates an application into three components: model, data and business logic; view, user interface; and controller, handles user input and communication between model and view. MVVM, Model View View Model, is a design pattern that separates an application into model, data, view, user interface, and view model, an abstraction of view that handles binding, state, and UI logic. Find the difference between both MVC and MVVM with real-time examples. दोस्तों, ये जो डिफरेंसेस हैं इसको आप समझिए, याद करिए, क्योंकि इसी टाइप के डिफरेंसेस आपके हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसमें मैंने पूरा रियल टाइम एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। Synchronous. Tasks are executed one after another, and each must complete before the next begins. Asynchronous. Tasks can run independently. One task doesn't block others, enabling parallel execution or continuation later. Find the difference between both, synchronous versus asynchronous, with real-time examples. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में
क्या डिफरेंसेस है, कब हमें सिंक्रोनस का यूज़ करना चाहिए, कब हमें असिंक्रोनस का यूज़ करना चाहिए हमारे एप्लीकेशन के हिसाब से। Authentication is the process of verifying who a user is, identity check. Authorization is the process of verifying what a user can access, permission check. Find the difference between both authentication versus authorization with real-time examples. जब भी आप एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हो छोटी से छोटी, हमें उसमें अथेंटिकेशन और अथोराइजेशन ज़रूर लगाना पड़ता है सिक्योरिटी के लिए। सो वहीं पर यहाँ पर उसका पूरा डिफरेंस बताया गया है कि कब हमको अथेंटिकेशन और कब हमें अथोराइजेशन यूज़ करना चाहिए, क्या है दोनों के बीच में डिफरेंस। Concurrency is the ability to deal with multiple tasks at the same time, but not necessarily executing them simultaneously. It's about managing multiple tasks. Parallelism is the ability to execute multiple tasks simultaneously, usually on multiple processors or cores. It's about doing multiple things at the same time. Method overloading, having multiple methods with the same name but different parameters, number or type, happens at compile time. Method overriding, redefining a method in a child class that already exists in the parent class, happens at runtime. Find the 10 difference between both method overloading and method overriding with real-time examples. दोस्तों, ये जो डिफरेंसेस हैं, इसको आप समझिए, याद करिए, क्योंकि इसी टाइप के डिफरेंसेस आपके हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसमें मैंने पूरा रियल टाइम एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। Encapsulation, wrapping data, variables and code, together into a single unit, class. It also hides the internal details by using access modifiers, private, public, etc. Abstraction, showing only the essential details and hiding unnecessary implementation, achieved using abstract classes and interfaces.
Find the 10 difference between both interface and abstract class with real-time examples. Managed code, code executed by the .NET Common Language Runtime, or CLR, which provides services like garbage collection, memory management, type safety, and exception handling. Unmanaged code, code executed directly by the operating system outside the control of CLR, example, C, C++ programs, COM components, Win32 APIs. Find the difference between both managed code versus unmanaged code with real-time examples. दोस्तों, ये जो डिफरेंसेस हैं इसको आप समझिए, याद करिए, क्योंकि इसी टाइप के डिफरेंसेस आपके हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसमें मैंने पूरा रियल टाइम एग्जांपल भी दिया हुआ है। Array list, a non-generic dynamic collection in C#. It stores items as object, which means type safety is not guaranteed. Example, ArrayList list equals new ArrayList. List is a generic dynamic collection introduced in .NET 2.0. It is type safe and stores elements of a specified type. Example, list of integer list equals new list of integer. Find the 10 difference between both ArrayList versus list with real-time examples. Inner join returns only the matching rows from both tables. Intersection. Outer join returns matching rows plus the non-matching rows from one or both tables, depending on the type, left, right, or full. Find the difference between both inner join versus outer join with real-time examples. Array is a fixed-sized collection of elements of the same type. Size must be defined at creation. Example, int array equals new int 5. List is a dynamic collection of elements of the same type. Size can grow or shrink at runtime. Example, list equals new list of integers. दोस्तों,
ये जो डिफरेंसेस हैं इसको आप समझिए, याद करिए, क्योंकि इसी टाइप के डिफरेंसेस आपके हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसमें मैंने पूरा रियल टाइम एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। Equals method is a method from system.object used to check content or value equality between two objects. Equals operator is an operator that, by default, checks reference equality, whether two references point to the same object. For value types, like int, it checks actual values. Get is an HTTP method used to request data from a server. Data is sent via the URL, query string. Post is an HTTP method used to send data to the server to create or update resources. Data is sent in the request body. Find the difference between both get versus post with real-time examples. वेब एपीआई में हम गेट और पोस्ट का यूज़ करते हैं। सो कब हमें गेट का यूज़ करना चाहिए, कब हमें पोस्ट का यूज़ करना चाहिए, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। Hash table, a non-generic key-value collection in C#. Keys and values are stored as object, so type safety is not guaranteed. Example, hash table HT equals new hash table. Dictionary of T key, comma value, a generic key-value collection in C#. It is type-safe, faster, and preferred in modern applications. Example, dictionary of int, comma string equals new dictionary. HTTP, or Hypertext Transfer Protocol, is a protocol used to transfer data between a web browser and a server, not encrypted. HTTPS, or Hypertext Transfer Protocol Secure, is an extension of HTTP that uses SSL/TLS encryption to secure data transfer. Find the difference between both HTTP versus HTTPS with real-time examples. दोस्तों, ये जो डिफरेंसेस हैं इसको आप समझिए, याद करिए, क्योंकि इसी टाइप के डिफरेंसेस आपके हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसमें मैंने पूरा रियल टाइम एग्जाम्पल भी दिया हुआ है।
Array, a fixed-size collection of elements of the same type. Example, int square brackets r equals new int square brackets 5. Array list, a dynamic size collection that can store any type of objects, not type-safe, stores as object. Example, array list list equals new array list. Find the 10 differences between both array versus array list with real-time examples. दोस्तों, ये जो डिफरेंसेस हैं इसको आप समझिए, याद करिए, क्योंकि इसी टाइप के डिफरेंसेस आपके हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसमें मैंने पूरा रियल टाइम एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। Stack memory, a special memory region used for storing method calls, local variables, and function parameters. It works in a last-in, first-out, or LIFO manner. Heap memory, a memory region used for storing objects, reference types, and dynamic data that may need to live beyond the scope of a method. Find the difference between both stack memory versus heap memory with real-time examples. Constant, const. A compile-time constant value. Once set, it cannot change and must be assigned at the time of declaration. Read-only, read-only. A runtime constant. It can be assigned either a declaration or inside a constructor, but cannot be changed afterward. Find the 10 differences between both constant versus read-only with real-time examples. हमें कब कांस्टेंट और कब रीड ओनली का यूज़ करना चाहिए? आप कहीं भी कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो, आपको कहीं ना कहीं कांस्टेंट डिफाइन करना पड़ता है, किसी वेरिएबल को आपको रीड ओनली डिफाइन करना पड़ता है। तो कब हमको ये दोनों में से कब कौन से सिचुएशन में यूज़ करना चाहिए, ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। Compile-time polymorphism, also called static polymorphism. The method to be called is decided at compile time, achieved through method overloading and operator overloading. Runtime polymorphism, also called dynamic polymorphism. The method to be called is decided at runtime, achieved through method overriding using inheritance. Find the 10 differences between both compile-time polymorphism versus runtime polymorphism with real-time examples. दोस्तों, ये जो डिफरेंसेस हैं इसको आप समझिए, याद करिए, क्योंकि इसी टाइप के डिफरेंसेस आपके हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसमें मैंने पूरा रियल टाइम एग्जाम्पल भी दिया हुआ है।
Clustered index. An index that sorts and stores the data rows in the table physically based on the index key. Each table can have only one clustered index. Non-clustered index. An index that stores pointers to the actual data rows. The data is stored separately and the index maintains a reference. A table can have multiple non-clustered indexes. Find the difference between both clustered index versus non-clustered index with real-time examples. जब भी आप डेटाबेस बनाते हैं तो उसमें इंडेक्सेस हम लोग लगाते हैं, तो कब हमें क्लस्टर इंडेक्स और कब हमें नॉन क्लस्टर इंडेक्स का यूज़ करना चाहिए, ये भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस है, डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर एंड नॉन क्लस्टर इंडेक्स. Class, a blueprint or template that defines properties, data, and behaviors, methods of an entity. Object, an instance of a class that actually occupies memory and can be used to access class members. Find the 10 difference between both class versus object with real-time examples. Authentication is the process of verifying who a user is, identity check. Authorization is the process of verifying what a user can access, permission check. Find the difference between both authentication versus authorization with real-time examples. दोस्तों, ये जो डिफरेंसेस हैं इसको आप समझिए, याद करिए, क्योंकि इसी टाइप के डिफरेंसेस आपके हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. इसमें मैंने पूरा रियल टाइम एग्जांपल भी दिया हुआ है. INumerable, used for in-memory collection like list, array. It loads all data into memory and then works on it, best when data is small. iQueryable, used for remote data source like SQL database. It builds a query and executes on the database side, fetching only required data, best for large data. Find the 10 difference between both INumerable and iQueryable with real-time examples. दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि आई न्यूमरेबल और आई क्यूरेबल का हमें कब यूज़ करना चाहिए, कौन सी चीज़ को हम मेमोरी में रखने हैं कि बाद ऑपरेशन करना चाहिए, कौन सा डायरेक्टली डेटाबेस साइट से फ़िल्टर करके लेके आता है. सो ये आई क्यूरेबल और आई न्यूमरेबल दोनों का डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है. Session, a server-side storage mechanism that stores user information for the duration of a user's visit or until timeout. Cookie, a client-side storage mechanism that stores small pieces of data in the user's browser. Find the difference between both session versus cookie with real-time examples.
Stored procedure. A precompiled collection of SQL statements and optional control of flow logic stored in the database used to perform operations like insert, update, delete, etc. Function. A reusable SQL routine that always returns a single value, scalar, or a table used mainly for computations. Find the difference between both stored procedure versus function with real-time examples. दोस्तों, ये जो डिफरेंसेस हैं इसको आप समझिए, याद करिए, क्योंकि इसी टाइप के डिफरेंसेस आपके हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसमें मैंने पूरा रियल टाइम एग्जांपल भी दिया हुआ है। Primary key, a column or set of columns that uniquely identifies each record in a table. A table can have only one primary key. Unique key, a constraint that ensures all values in a column or combination of columns are unique, but it allows one null, depending on DBMS. Find the difference between both primary key versus unique key with real-time examples. दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देख लिया है तो आपको ये सारे जो 40 डिफरेंसेस हैं इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। जो अब जब भी आपका इंटरव्यू हो, आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर ध्यान में रख के आंसर दीजिए और आपका इंटरव्यू डेफिनेटली क्लियर होगा। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको और किस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस टाइप के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियोज़ में और अच्छे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू।